हमारी भाई जिसमें हमारी साउथ ईस्ट एशिया से, हमारी इंडिया पाकिस्तान से बहुत भाई सब ड्राइवर है। तो आप जानता है कि हम 98 से न्यूयॉर्क टैक्सी वर्कर एलायंस ऑफिशियली फाउंडेड हुआ। हमारी भैरवी देसाई हमारी लीडर है, उस टाइम से नॉन स्टॉप फाइट कर रहा है TLC ड्राइवर के खिलाफ में। तो हमारी जो अभी जो खिलाफ में चल रहा है ऊबर एंड लिफ्ट ड्राइवर के खिलाफ में, क्यों उसने हमारी जे पेमेंट इंक्रीज करना ड्राइवर को वो बंद कर दिया, कोर्ट से बंद कराया केस करके। तो टैक्स TLC हमारी प्रोटेस्ट से फिर दोबारा शुरू किया। तो हम लोग चाहता हूँ उससे पहले हमारी पावर स्ट्रेंथ लेना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो इसीलिए हमारी कम्युनिटी के साउथ ईस्ट एशिया, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन सारा भाई लोग, कम्युनिटी लीडर सारा लोग आए। इसीलिए हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी मैं भैरवी देसाई हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप लोगों से बात करेगा, आप लोगों से क्वेश्चन करेगा, आप लोगों से आंसर देगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद टीपू सुल्तान है। थैंक यू सो मच। एंजॉय, टेक केयर ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच। Thank you, Tipu Bey. Yes. Good evening, everybody. Thank you so much for being here. I am Bhairavi Desai. I'm the Executive Director of the New York Taxi Workers Alliance. I'm so honored to be up here today with some of our members who are the real heroes of this story. The drivers of Uber and Lyft who have taken a very strong and brave decision to continue to strike until Uber and Lyft deliver the justice to the drivers. So we want to today talk to you urgently about our strike for Sunday, February 26th. But before we begin, I would really like everybody here to introduce themselves. So if we can go, one by one, and everybody can say their names. And perhaps, if you do drive or if you're a staff member. Okay, we can start Great. with you. Gabriel Strakota, and I'm a staff organizer with the New York Taxi Workers Alliance. Mohsin Zaheer, I'm a Uber driver since 2014 till now. My name is Adizul Haq. I'm a driver organizer and movement leader. This is Sonam Sebes speaking, and I'm Uber and Lyft driver, and I've been driving since 2016. Hi, my name is Nusrat Jahan. I'm an Uber and Lyft driver for the last 4 years, and I'm also a proud member of NYTWA, New York Workers Alliance. Thank you. I'm Mohsin Zaheer. मैं टैक्सी वर्कर लाइन्स काम करना है, स्टाफ मेंबर एंड बेनिफिट मैनेजर है, सारी ड्राइवर की सेवा करते हैं। My name is Jani Tarak. I'm co-founder and senior staff person in New York Taxi Workers Alliance. My name is B.J. Haider. I'm staff of NYTWA, organizing the Uber and Lyft driver, and member of the union since 2003 as well. That's right. So I'm so proud that I get to work every day with Tipu Bey and Biju Bey and Javed, who is our co-founder, Mr. Singh, and Gabe, who's done a brilliant job with our organizing. But I have to tell you from all of us that the people we really want you to hear from are our members. Because without Brother Lashkar, Aziz Bey, Sonam Ji, and Nusrat Ji, we would not be here. It's their courage to fight against their company that brings us all together. So, and when we are sitting here, we are representing a union of almost 30,000 members who drive across the city. Uber, Lyft, also yellow, green, some livery, and some corporate black car members as well. But the majority of our members now drive for Uber and Lyft. So let me tell you why we are doing this strike, to begin there. So last year, everybody knows that the cost of bread and milk was more expensive in America than, compared to last 40 years.
it cost the most amount of money to buy bread and milk last year in the United States of America, more than any other time in the last 40 years. And so every American was having a hard time. But for drivers, they have to pay for the expense of the car, for gasoline, for insurance, repairs, maintenance, the lease, or the financing. Those expenses in our New York region, they went up 250 times more than even the cost of bread and milk. So the Taxi and Limousine Commission has a regulation on how much on every trip for each mile and each minute Uber and Lyft must pay to the drivers. So we went to the TLC and we said, drivers need a raise. We were fighting for a raise for all drivers. TLC agreed to give that raise. Every year, the TLC looks at the inflation and they give a small adjustment for the per mile and per minute rate according to how much the household expenses went up. But last year, because of the crisis of gasoline and the car costs, our organization and Nusratji, Aziz Bey, two of our main speakers, every public hearing we testified, we fought for a raise according to the inflation of gasoline and the car cost. And the TLC agreed. So TLC said, okay, the per minute rate will go up by 7%, but the per mile rate will go up by 21%. And we were going to get that raise beginning on December 19th, 2022. Same day, yellow and green cab meter was going up, first time in 10 years. But on December 9th, in the final hour, on a Friday evening, like right now, Uber went to court and they filed a lawsuit to stop the raise. Uber said that this raise would cost them too much money. At the same time, in the same court papers, Uber told the court that from 2019 to 2022, they are charging the public 49% more. So Uber has no problem charging the public more, they just don't want to pay the drivers more. And so since that time, from December 19th, again on January 6th, and now on February 26th, our union has continued to organize for a strike. On February 1st, Uber did raise the rates because TLC required them to, but it was a small percentage, only according to how much the expenses for bread and milk went up. But the raise that drivers were going to get, based on how much gasoline and car costs went up, we're still waiting for that raise. We're still fighting for that raise. And so that is one of the demands of our strike. But our strike is not just about one raise. Our strike is to send a message to Uber and Lyft that the drivers have a right to be paid a fair rate. Drivers do the work, they pay the expenses, they take the risks. Drivers must be paid what is due to them. And to demand that Uber and Lyft, that they stop deactivating drivers. Deactivation is a very fancy way of saying they are taking the job away. That one day you wake up and you're getting ready to go to work, you go on your app and you find out they took you off. They said, no more. You cannot work for us anymore. No notice, no real reason, and no real right to appeal. But the drivers still have the expenses, maybe $60,000 for that car payment. They're left with no income, no job, no path to get the job back, but very high expenses. So we are working with the councilman
Shekhar Krishnan, who is going to introduce a bill in City Council to give the drivers the right to stop these unfair deactivations. So our strike on February 26th, fundamentally, it is about winning back the full raise that Uber sued to stop. It is about stopping unfair deactivation so drivers who spend all this money have a sense of notice and real job security. And it is about raising the rates on things like out-of-town fares and for services like Uber XL SUVs, where you have a large car, more expenses, but they're paying you the less rate. And for all Uber and Lyft drivers, that while Uber and Lyft are charging the public 50% more compared to 2019, as they charge the public more, they must pay more to the drivers. Right. Driver pay cannot be frozen at just a minimum pay. We demand that as driver labor and expenses bring in more wealth to the companies and they charge more to the public, they must share that with the drivers who are making that revenue possible. And so on February 26th, if you give one message to our community, this is the message I ask you to give. To my brothers and sisters who are driving for Uber and Lyft, to their wives, their husbands, their children, their parents, their families, our strike on February 26th is maybe the most important strike we have done in our 27-year history as a union. With this strike, we can send a powerful message to the biggest companies in this country to say to them that the drivers are united, we are not scared, we will not be divided, we will not be silent, we demand what is ours, we are not asking for a penny more, what we want is real justice. If we have a successful strike on February 26th, the Uber and Lyft drivers of New York City, for the first time, will feel real power in their hands. And so I say to the drivers, and I say to your families, please stand with us for this strike. You can still work the city, you can still work Kennedy. Drivers will not have to sacrifice very much, but when all drivers do the strike, in our hands we have real power to make Uber and Lyft feel the pressure that they make drivers feel every day. And so please help us spread that word. Driver power. Driver power. Union power. Yes. Driver power. Union power. Union power. Driver power. Union power. Driver power. Driver power. Union power. I would now like to ask Azizba, you should just start us off. You started the chant. To my great brother, Muhammad Aziz al-Haq. Thank you, Bhairavi. Sorry. Please. Thank you, everyone. You want to come here? What is your name? No, it's okay. No, it's okay. We can change it. Whoever speaks, you put the mic in front Okay. of them. Whenever, if you. Sorry, just Thank you, everyone. Can you speak আজকে in আবার Bangla? একটু পরিচয়টা দেবেন আপনার In Bangla. আচ্ছা, একবার quiz করছি, দেখ জি, আমার কি দোষ? আরেকবার দেন। আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আজিজুল হক। আমি আসলে নিউ ইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি ওয়ার্কার অ্যালায়েন্সের একজন ড্রাইভার এবং 26th is a very important day. We need all the drivers and we ask all their families join us for the rally at the airport at 12 noon. And believe me, my brother, we feel very proud of the strike we did on December 19th and on January 6th. If Uber and Lyft say your strike was not successful, we take that with a badge of honor. That means the companies are scared of what we are doing. they're listening. And we know that February 26th will be even stronger strike.
मेरा नाम जावेद है और मैं को फाउंडर हूँ न्यूयॉर्क टैक्सी वर्कर अलायंस और ऑर्गेनाइज़र और सीनियर स्टाफ पर्सन हूँ। जैसा कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारी उबर की स्ट्राइक के लिए, क्योंकि यहाँ जो उबर का ड्राइवर है, उबर लिफ्ट और जितने भी ऐप ड्राइवर हैं वो बुरी तरह गुर्बत में पिस रहे हैं। उबर कंपनी जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बना रही है मगर ड्राइवर को बहुत कम पैसा दे रही है। तो इसलिए हमने बड़ी कोशिशें की और बड़ी स्ट्राइक करके हमने रेट बढ़वाया टैक्सी एंड लिमोजिन कमीशन से कि ड्राइवर को फेयर शेयर मिले, जो कि 19 दिसंबर को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। येलो कैब और ग्रीन कैब का तो किराया बढ़ गया मगर उबर कंपनी चली गई कोर्ट में और कोर्ट में जाके उन्होंने रुकवा दिया। जबकि जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी स्टडीज़ की है कि उबर ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया ड्राइवरों के हार्ड वर्क पे। उसके कोरोना के दौरान भी उन्होंने तकरीबन 49% ज़्यादा पैसा चार्ज किया पैसेंजर से और ड्राइवर को बहुत कम पैसा दिया। और यही प्रैक्टिस उनकी शुरू से चली आ रही है। वी कॉल इट स्वेट शॉप ऑन व्हील्स, कि ये ड्राइवरों को इतना यूज़ करते हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, तिब्बतन और बर्मीज ड्राइवर्स की कम्युनिटी है, जो कि 60 to 70% बनती है टैक्सी इंडस्ट्री में। तो इसलिए हम 96-98 से ये फाइट कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स के लिए। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि आप येलो कैब ड्राइवर्स को बेनिफिट देते हैं और हमारे नहीं। हम सबका लाइसेंस एक है, चाहे वो उबर चलाते हों, चाहे वो येलो कैब चलाते हो या ग्रीन कैब चलाते हो, हम सब का TLC का लाइसेंस एक है। हम प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं और हम सब चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना पैसा होना चाहिए हमारा कि हम आसानी से फूड टेबल पे ला सकें। मगर ये जो कंपनियां हैं ये इतना को इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं। इसके लिए हमें हर सूरत खड़ा होना है और बड़े स्ट्रांगली तरीके से खड़ा होना है। इसलिए हम हर कम्युनिटी को, हर ड्राइवर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जब तक एक मुट्ठी होकर नहीं लड़ेंगे हम ये चीज़ें जीत नहीं सकते। हाँ, उबर कंपनी और दूसरों के पास पैसा है मगर हमारे पास स्ट्रेंथ है ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स के बगैर यूनियन कुछ नहीं है। और हम यही चीज़ लाना चाहते हैं कि रिगार्डलेस एनी रिलीजन, एनी एथनिसिटी और किसी भी किस्म की शनाख्त के बगैर हम सब इकट्ठे एक हैं और हम मिलकर फाइट करें। इसलिए हमने 19 दिसंबर को भी स्ट्राइक की थी, जिसमें उबर ने भी कहा कि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है मगर हम ये चाहते हैं कि अच्छी पे मिले ड्राइवर को। जो हमने पास करवाई थी 19 दिसंबर को, हम उसी पे टिके हुए हैं और हम वी विल नॉट गिव अप, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें अपने राइट्स न मिल जाइए। इसलिए हम 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक LaGuardia एयरपोर्ट पे हड़ताल कर रहे हैं कि आप सिटी में काम कीजिए, आप JF के पैसेंजर ले जाइए, JFK से ले आइए, आप LaGuardia पैसेंजर उतार सकते हैं मगर वहाँ से पैसेंजर नहीं उठाना, ताकि सिटी को पता चले, पैसेंजर्स को भी पता चले कि भाई ये क्या हो रहा है, हमसे इतने पैसे ये चार्ज करते हैं, ड्राइवर को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है सब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, तिब्बतन भाइयों से और दूसरे एथनिक ग्रुप जो हैं कि भाई हम सब इकट्ठे हो गए 12 घंटे के लिए। यकीन कीजिए, चलो हम 10, 20, 30, $40 लूज़ करेंगे मगर कंपनी को पता चलेगा कि वो कितना पैसा लूज़ करती है और पब्लिक को पता चलेगा कि असल वजूहात क्या है इनकी स्ट्राइक करने की। तो इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम भाई सब इकट्ठे होकर 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक LaGuardia एयरपोर्ट पे स्ट्राइक करें। थैंक यू। मेरी तरफ तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਬਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਬਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰਾਤੀ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, JFK ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਵਾਰੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਬਰ ਸਾਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ % ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 40-45% ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮਟੈਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ और सारे नाल खड़े होना। थैंक यू सो मच। हमारा जो और दूसरी सबसे बड़ी डिमांड है हमारी वो है डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन ऊबर ड्राइवर के लिए ऐसी है जैसे कोई जज आपको मौत की सज़ा सुना दे। आप आज 40-50 हज़ार डॉलर की गाड़ी लेते हैं कि जी मैं 4-5 साल काम करूँगा, 4 पैसे कमाऊँगा और मेरी गाड़ी पेड ऑफ हो जाएगी, ये मेरा कारोबार है। मगर आप अगर 6 महीने के बाद अचानक उबर आपको डीएक्टिवेट कर सकता है, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके उनके खिलाफ कोई सू कर सके। तो अब फिर आपने गाड़ी की किस्तें देनी है, आपने इंश्योरेंस देनी है, आपने सारे किराए खर्चे देने हैं, तो आप तो जॉबलेस हो गए। कई लोग बैंकरप्ट हो चुके इस सिलसिले में। तो ये जो हमने बुध वाली रात हमारी जो जूम कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारे काउंसिल मेंबर शेखर जो इस इलाके के हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक रूल सिटी में कि सिटी काउंसिल में कि इस चीज़ को रोका जाए और इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए ताकि ड्राइवर को डीएक्टिवेट ना किया जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऑलमोस्ट इन सालों में उबर ने 20,000 ड्राइवर को डीएक्टिवेट किया है। उनकी रोजी चली गई, उनके में कई लोगों ने बैंकरप्सी कर ली, भूखे मर गए बेचारे। मगर ये बहुत जालमाना किस्म की उनकी प्रैक्टिस है। तो इसलिए हमारा ये सबसे बड़ा डिमांड, इसीलिए ये हम स्ट्राइक में ये हमारी 5 डिमांड्स हैं जो हम चाहते हैं कि उनको नज़रसानी की जाए उन पे और हमें हमारे राइट्स दिए जाए। जी हाँ, तो वो हमारी डिमांड है कि प्रीमियम रेट्स ना, प्रीमियम जॉब्स के लिए प्रीमियम रेट्स होने चाहिए। आउट ऑफ द सिटी आल्सो टैक्सी लिमोजिन कमीशन जो है उसका रेट फिक्स करे। क्योंकि अगर आप न्यू जर्सी को फेयर लेके जाते हैं तो आपको न्यू जर्सी वाला रेट देते हैं, तो ये बहुत ही कम है। और ड्राइवर ने बाकायदा आप जो ऊबर है वो दोनों तरफ से पैसेंजर से टोल वगैरह ले लेती है, मगर ड्राइवर को एक टोल देती है। तो उनके बहुत ही इस तरह की चलाकबाजियाँ हैं ऊबर की। हमने 2018 में लासूट किया था ऊबर को कि ऊबर ड्राइवरों का पैसा चोरी कर रही है 2013 से लेकर 2017 तक। उस वक्त उन्होंने $86 मिलियन वापस किया ड्राइवरों को, जो कि 20% है। अभी 80% उन्होंने ड्राइवर्स को देना जो उन्होंने ड्राइवरों से लूटा है। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी हो सके वो उनको पैसा लौटाएं। ये वेज थेफ्ट है और इसके लिए हम बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनसे पैसा लिया जाए। तो इस तरह जो भी वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं ड्राइवर्स को, हम उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। जी सर। এক্সেল গাড়ি চালাই, তো এমন হয়েছে আমার সাথে যে আমি 6টা প্যাসেঞ্জার নিয়েছি, 10 মিনিটস ড্রাইভ করেছি, আই গট অনলি $5.39। সো পার প্যাসেঞ্জার ওরা যদি বাসও নিত, ট্রেনও নিত, they have to pay $2.75, right, bus trip, and all I'm getting for 6 passengers $5 something, just because the duration is between 5 to 7 minutes. So also the deactivation যখন ওরা করছে, অনেক ড্রাইভার আছে যারা কিনা 5 স্টার পাচ্ছে, 10,000, 5,000, 5 স্টার, they are also getting deactivated. Why? একজন প্যাসেঞ্জার আমার প্রতি মানে নাখোশ থাকতেই পারে, বাট দেয়ার ওয়ার লাইক 1000 প্যাসেঞ্জার আমার প্রতি হ্যাপি ছিল, আমার প্রতি অনেক বেটার রিমার্ক দিয়েছে।
সো আমাদের এটা আমাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করলে আমাকে একটা চান্স দিতে হবে টু প্রুভ। অনেক সময় বলে যে প্যাসেঞ্জার ক্লেম করেছে যে ড্রাইভার ইজ ড্রাঙ্ক। ইফ ড্রাইভার ইজ ড্রাঙ্ক দেন দে শুড হ্যাভ এ পলিসি, ওকে তুমি 24 hours বা সাম আওয়ার্সের মধ্যে ওখানে যে টেস্ট করে আসো, রাইট? হাউ ডু ইউ নো ড্রাইভার ইজ ড্রাঙ্ক? just because somebody complained that driver is drunk? No driver drunk, no driver drunk and drive. কেউ এটা বলতে পারবে না, রাইট? Don't forget to like, comment and subscribe.